Okay, fine. Now again, welcome back. I'm sharing some of the screen over here. The PPT there again. I'm hardly remembering our founder, Dr. V.M. Gaikwad sir, and start our lectures now. See, this is today again. Welcome, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Masai West, TYBSCIT-V SEM subject, Enterprise Java, Unit 1, Understanding Java E. So, what is Java E? That I have to present it you by Assistant Professor Bipin Vaiti. Have you know about the Java E? कहाँ पे सुना है आपने Java E क्या है? See that Java E, it is a application programming interface. आपको सबको शेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके फाइन. लोग चालू रखेंगे. अगर डिस्टरबेंस आ रहा है तो म्यूट करके आप लोग जब भी आपको डाउट है अनम्यूट करो. लेकिन अभी आप लोग ये ट्राई खुद ही करना है क्योंकि मैं बार बार अपना स्क्रीन देखूं कि आपको देखते रहूं तो टाइम लगेगा. तो यू हैव टू जस्ट एथिकल बिहेवियर इन ऑनलाइन सेशंस. ओके, आपको जब भी लगता है तो आप लोग अनम्यूट करो और नहीं है बोलना नहीं है तभी आप म्यूट ही रखो. क्लियर? तभी आपका मेरा वॉइस क्लियरली आपको सुनाई देगा और डिस्टरबेंस और नेटवर्क कम लगेगा. ओके ओके ओके. नाउ व्हाट इज Java E? See that now Java E is a widely used platform containing a set of coordinated technologies. एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज Java E. दे आर गिविंग दैट प्लेटफॉर्म. एक जेडीके प्लेटफॉर्म है हमारा, जावा डेवलपमेंट किट प्लेटफॉर्म, जिसमें हम लोग नॉर्मली कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं लाइक विंडोज एप्लीकेशंस. उसके अलावा आपको अगर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, दैट मींस योर बिजनेस एप्लीकेशन इफ यू वांट टू डेवलप, तो यू हैव टू यूज दैट Java E technology that significantly reduce the cost and complexity of developing, deploying and managing multi-tier server centric application. It's like server client. आपका कॉस्ट भी कम लग रहा है. देयर क्लाइंट एंड सर्वर मल्टी टायर स्ट्रक्चर, मतलब जैसे वी आर गिविंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपने सुना भी होगा. क्लाइंट गिव द रिक्वेस्ट इन द गूगल, व्हाट यू वांट टू सी, व्हाट यू वांट टू नो, so we are writing the keywords, so we are searching the data. That time this request go to the particular server and that server listen the request and prepare the response on runtime and they directly respond to you immediately, and that is called what? Server side scripting, and that is going on server application, and that's why we are using Java, but it is enterprise application. Have you got it? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yeah. That means they are developing very complexity of developing, deploying and managing multi-tier structure over there and creating server application. So it builds upon the Java SE. Of course, secondary editions they are given in that platform, and API, application programming interface. Have you know about application program? See that now Windows program कैसे रहता? पहले DOS based, it is command prompt, black and white. Now at present it is Windows based, that is application programming interface. So that is for developing sorry, admit one more Priyanka Desai. Okay, now for developing and running portable, robust, scalable, reliable, secure server side application. मतलब ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है that we can save the file. You know that Java create a bytecode and you can run anywhere. That is the main facility in the Java. So Java, it is portable. Portable मतलब you can run anywhere. Robust, robust, of course, it is a what? हम लोग कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम, वेरी डिजाइन, वेल डिजाइन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वी कैन डेवलप हियर. स्केलेबल, साइजेबल में बहुत कम है. बाइट कोड, यू नो दैट, ये कन्वर्ट करता है कंपाइल होने के बाद क्लास फाइल बनाता है, तो इट इज वेरी लेस स्केलेबल. दैट मींस बहुत साइजिंग में कम होता है. रिलायबल भी है, सिक्योर्ड है. ओके, तो दैट इज वी आर यूजिंग Java E. Now you understood about what is Java E? Yes student? हाँ student, reply me. क्या है Java E? समझ में आ रहा है? Java is one of the enterprise edition. मतलब पहले हम लोग जो Java कर रहे थे
और अभी जो जावा करने वाले हैं उसमें खाली एक डिफरेंस है, वो वहां पे हम लोग यूजर लेवल कर रहे थे एंड नाउ इट इज एंटरप्राइज लेवल. एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस लेवल वी कैन डेवलप द कस्टम सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज जावा ई. गॉट इट? समझ में आया? यस सर? ओके फाइन. तो जैसा रिप्लाई करते रहो, मुझे मतलब पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इट इज जावा डिफिकल्ट टू टीच यू. ये लैंग्वेज ऐसा है कि जिसको समझ में आया वही समझ सकता है, और ना वो क्या आपको पता है हाउ डिफिकल्टी वी आर फेसिंग इन द जावा. C++ की तरह नहीं है, बट इसका अपग्रेड वर्जन जो जावा है वो नेटबिन्स में हम लोग को करना है, तो वी कैन इजीली हैंडल. नेटबिन्स में इजी कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए वर्चुअली हम लोग को ये थ्योरेटिकल पार्ट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ओके. डिस्टर्बेंस आ रहा है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस निकालो, ओके, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले. तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय जावा ई. एक वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, हम लोग सर्वलेट करने वाले, आज हम लोग सर्वलेट देखने वाले. देयर फर्स्ट टेक्नोलॉजी जावा सर्वलेट. दिस इज एन एप्लीकेशन प्रेजेंट इनसाइड अ वेब सर्वर. It is web server. Have you know about web server? Google is web server. All those who are creating the website, that is one of the web server. It accept the request from client. We are just go on that particular site. We are giving the request, what information you want, and they generate the response, and they dynamically generate the response. Okay. So then send the response to the client. That is the work of server side. क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन है, दैट इज HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स. व्हाट इज HTTP? यस स्टूडेंट, व्हाट इज द HTTP? हेलो स्टूडेंट. Yes, hypertext transfer protocol, and that is very good. Transfer protocol. Very good. That is transfer. We are giving. Sir, thank you. That means we are client and their server create the response and then send it to the client. That means is a HTTP response. Got it? Yes. ये चीजें हम लोग सर्वलेट में करने वाले हैं. तो इट कैन बी done using various servlet API. बहुत सारे application programming interface we are using over here for servlet. We are creating classes and interfaces. Got it? First technology. Now we got it. Web application technology, Java servlet. Here we are using the JSP, just like ASP. Normally in HTML we are using active server page for server side scripting, but here we are using Java, so that's why they are giving Java server pages. That means our files names for server response is the .jsp. What is there? .jsp. JSP. Yeah, that is Java server pages. So it is present inside the web server, which is mainly used to embed. Embed means changeable. Always it is changeable. Those who are जैसे client request करेगा वैसा ही request का response आपको मिलेगा. That means it is embeddable. Embed always they give you different response. इसलिए तो आप Google में search करते हो तो there are many various linking pages are coming over there. That means embedded. हर एक चीज का आंसर्स उन लोग ऐसे कंटेंट के हिसाब से देते हैं, कीवर्ड के हिसाब से देते हैं. That is embedded. Got it? Then Java is HTML. Of course हम लोग जो जावा का प्रोग्राम नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे विथ यूजिंग HTML लैंग्वेज, तो इसका मतलब HTML भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बिकॉज वी आर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन. सो वेब एप्लीकेशन में वी रिक्वायर द HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, that all tags we require whatever formatting related work. So it is more easier for those web designers who are more, it is more easier for those web designers who are more comfortable in scripting language. जो लोग HTML के scripting language, that is in the JavaScript. Have you know about the JavaScript? HTML हम लोगों ने किया है. We have already learned about the web designing course. Hello sir, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है. हाँ, बीच बीच जब भी आवाज नहीं आ रही है ना, बताओ कनेक्टिविटी जा रहा है क्या है, पता चलेगा. ओके. So I am sharing the screen. See now share दिखाई दे रही है. Yes student, स्क्रीन दिखाई दिखाई दे रही है. अभी भी कनेक्टिविटी जा रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे बताओ. अभी आपको लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ तक JSP तक बताया था, हमने सुना था JSP का बताया. Okay, so JSP Java server pages
here HTML, Java में HTML क्या है? Because we are whatever we are designing the web page, we require the HTML language. So HTML and it supports many scripting language. So here we are using JavaScript language, or we have to know the last year well known about the scripting, क्योंकि आपने last year web designing course किया हुआ है, आपने डेवलप किया था. Yes or no? HTML आपने देखा होगा वेबसाइट के लिए, HTML, JavaScript, PHP क्या होगा ना? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे भी लगेगी, तो we have to HTML यूज करना है, स्क्रिप्टिंग यूज करना है. Then third web technology is the JSF, that is a Java Server Faces. Java Server Faces. By mistakenly it is JSP is given. It is an user interface. See here, JSP it is given. तो JSF है. JSF मतलब Java Server Faces. सर्वर फेस. It is an user interface framework. एक फ्रेमवर्क है जैसे .NET है फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन. मतलब हम लोग .NET के से मिडलवेयर यूज करके वी आर इंटरेक्टिंग द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड. सेम लाइक दैट हियर एक फ्रेमवर्क है जो आपको वेब एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा. सो इट इज अ यूजर इंटरफेस कंपोनेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Clear about that? Sir. Okay. So Sir, आवाज ब्रेक बहुत हो रहा है. आवाज हाँ, ब्रेक हो सर. रहा है तो सब लोग अपने आप को म्यूट रखो, और जब भी बात करनी है तभी अनम्यूट करो. ओके, इसलिए मैं बार बार अभी स्क्रीन के पास चला नहीं जाऊंगा. म्यूट करो, इन अनम्यूट करो, बिकॉज आई वांट टू शो यू मोर थिंग्स ओवर देयर इन द एप्लीकेशन. क्योंकि मुझे अब पीपीटी बनाया है 17 स्लाइड्स है, उसके साथ आपका प्रैक्टिकल देखना है. ओके, so okay, fine. So now second technology is there, enterprise application technology. Okay, have you listen? आप मेरा वॉइस आ रहा है Yes, sir. सबको? Okay, enterprise was आप लोगों को इसके अलावा मैंने क्या बोला था आपको, there are custom built software you can develop easily with the using Java application. But when you are using web application, there are enterprise. Enterprise means what? Business application. So there we have to use EJB, JPA. EJB means Enterprise Java Beans. So this is also scalable, transactional, reusable, secure building blocks which are present pride web server. एक वेब सर्वर के ऊपर आप एक EJB पार्ट बना के just get set वे, मतलब आपने जैसे आपने कोडिंग लिखा वैसे ही आपको सर्वर में वो रिस्पांस देना चालू हो गया. एनीवन कैन ऑनलाइन हम लोग कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं. That work we can do it to the EJB, and it can be used by various web application like Servlet, JSP, etc. Got it? समझ में आ? जैसे देखो कभी कभी कुछ सर्वर में, जैसे बैंक के सर्वर में चेंजेस करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर ऑफ करेंगे और बाद में करते बैठेंगे, फिर जब भी चालू होगा तभी सर्वर चालू होगा. अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है. अभी क्या करेंगे, कोड में डायरेक्टली जो प्रोग्रामर लिखना चाहता है वो डायरेक्टली अपना कोडिंग चेंज कर सकता है और ऑनलाइन उसको सेंड भी कर सकता है. दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज जावा बीन्स गेट सेट मेथड. गॉट इट? गॉट इट? यस स्टूडेंट, reply me. Yes, sir. Okay, Yes, next. sir. Yes. JPA. JPA is a Java Persistence Application Program Interface. So it's a Java standard API. Object Relational Mapping. अभी देखो कोडिंग लिखते वक्त बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कौन सा फाइल कौन सा, क्योंकि देयर आर मेनी क्लास फाइल, तो एक दूसरे से लिंक करने के लिए प्रॉब्लम होती है. तो इन्होंने एंटरप्राइज एप्लीकेशन ने अभी क्या किया है, मतलब दे आर गेटिंग टूल्स एंड दे आर सेइंग आपको कौन से क्लास से लिंक करना है, जस्ट दे ड्रैग इट दैट क्लास and that link will automatically called object relational mapping, ORM. Okay, ORM. So it is a solution of persistence. It uses an ORM approach to bridge the gap between object oriented model and relational database. कैसे होता है कि किसका कनेक्टिविटी किससे है, क्या है डेटाबेस का, that we are getting trouble. So that's why we are using JPA application, and we can easily create the object oriented model. जैसे आज आप देखते हो पेंट में सर्कल पे ऊपर क्लिक किया सर्कल ऑब्जेक्ट आ जाता है, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट आता है. ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि जो खाली टूल करो और ले लो. ऐसे ही प्रोग्रामिंग में दे आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड रिलेशनल डेटाबेस. उसके बीच में जो भी आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएटिंग करना है, लेना है, कनेक्टिविटी करनी है, वो हम लोग JPA में
जल्दी जल्दी कर सकते हैं, एंड वी कैन डेवलप इजीली एनी वेब एप्लीकेशंस, so that is JPA. Got it? Yes, student. Student, reply. Yes, sir. Okay, Yes, reply. sir. Yes, sir. ओके, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आते हैं आप मुझे बीच बीच में जिसको भी एक एक स्टूडेंट बता सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, ठीक, okay, sir. Okay. fine. Next, we can see the third technology, that is the web service. Of course, now today all tools, all website is going on web services technology. जैसे अभी ये हम लोग Zoom यूज कर रहे हैं, या there are services like email, there are services like what online streaming, जो भी है ये सारी चीजें वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजीज में आती है। जैसे पहले है SOAP एंड RESTful, सो दिस आर ऑल API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बट ये क्या है, सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड कर रही है। तो वेब सर्विसेज डिफाइंस द API फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सच सर्विसेज बिल्ड अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मतलब हम लोग को जैसे जरूरतें हमारी लग रही है वैसे वो टूल्स देके हम लोग को वेब सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं और वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया, जैसे जरूरत लग रही है ऐड आ रहा है। तो ऑल आर सर्विसेज, दिस आर नॉट ओनली वेब सर्विसेज। तो नई नई टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलती है? XML। अब XML क्या है बता मुझे? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो दैट मीन्स हम लोग जो नया डेवलपमेंट जो भी करेंगे उसको डेवलपमेंट में अगर वेब एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो इट इज अ वेब सर्विस। गॉट इट? अंडरस्टूड अबाउट दैट? So there are many web services technologies are all, ये एडवांस है, आपके पोर्शंस में नहीं है, बट वी हैव टू नो अबाउट दैट। SOAP, RESTful क्या होता है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। थर्ड वन, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको पता है जावा इज अ सिक्योर्ड लैंग्वेज, कि बाकी लैंग्वेज में हैकिंग पॉसिबल है लेकिन जावा में कम है, होता ही नहीं है। क्यों बताओ, कौन बताएगा? उसका टेक्नोलॉजी अच्छा आता है ना सर? बोलो ना, क्या होता है सिक्योरिटी के लिए? यस, फायरवॉल अच्छा रहेगा सर। जावा सिक्योर्ड क्यों है? व्हाई इट इज जावा सिक्योर्ड? बोलो जल्दी। यस, जावा सिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि आप जानते हो सिक्योर्ड क्यों है, एक ही है, इट कन्वर्ट्स एनी फाइल्स इनटू बाइट कोड, तो 0s and 1, और आप लोग कोडिंग अपने पास ही रखते हो, प्रोग्रामर के पास, आप वो बाइट कोड लेके किधर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो किसी को कोड दिखाई देगा ही नहीं, इसका मतलब उसमें कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। अंडरस्टूड? यस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो जावा लैंग्वेज कोड कन्वर्ट होता है और वो क्लास फाइल हम लोग किधर भी जाके रन कर सकते हैं, तो जावा का प्रोग्राम दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब इट इज सिक्योर। सो वी रिक्वायर, जो भी आप लोग को वो कोडिंग चेंज करनी है तो वी रिक्वायर द ऑथेंटिकेट पर्सन। यस और नो? सो दिस इज सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। गिवन जावा ऑथराइजेशन सर्विस प्रोवाइडर कॉन्टैक्ट फॉर कंटेनर, जो JCC होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके थ्रू दे आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। Authorized policy we have to use and then only we can change, so they are giving the JCC. Clear? उसके बाद जावा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस कंटेनर है, जास स्पीक करके हम लोग है, इट स्पेसिफिकेशन डिफाइंड सर्विस प्रोवाइडर इंटरफेस, ओके, SPI, विच गिव नो ऑथेंटिकेट। मतलब अगर आपको इसी तरह किसी का भी जावा फाइल्स रेक्टिफाई या आपको चेंजेस करने हैं, तो वी हैव टू टेक द फर्स्ट अपॉन ऑथेंटिकेशन, जो जिसने प्रोग्राम बनाया हुआ है, और देन आफ्टर दैट वी हैव टू डेवलप समथिंग या चेंजेस समथिंग। ओके, अंडरस्टूड अबाउट दैट? डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए उसको बोलते हैं सिक्योर टेक्नोलॉजी। क्लियर ऑल ऑफ यू? सारे जावा ये की टेक्नोलॉजी समझ में आए? देखो मैं वापिस सारी टेक्नोलॉजी बता रहा हूं। पहला वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, टुडे वी हैव टू सी दैट जावा सर्वलेट। Second one, it is given Java server pages. Third one, Java server page. It is the all web application technology. ये तीनों टेक्नोलॉजी हम लोग इस साल देखने वाले हैं, because we have to develop the web applications in that year. Okay, is it clear? Okay, sir. Next, Yes, sir. उसके बाद enterprise application technology, that is EJB and JPA. EJB enterprise Java beans, JPA Java persistence, okay, programming interface. Now उसके बाद वेब सर्विसेज टेक्नोलॉजी,
देयर आर, मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे सर्विसेज, ऑनलाइन वेब सर्विसेज मिल रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू दैट वेब सर्विस, SOAP, RESTful एंड ऑल, एंड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, JSCC एंड JSPIC. गॉट इट? ओके, चलो. नाउ सम कोर टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूज इन द जावा. ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं और इस में देख रहे हैं. एक जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, EJB, एंटरप्राइज जावा बीन्स. RMI, रिमोट इंटरफेस, रिमोट मेथड इंटरफेस, या डेरिवेटिव. JSP, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वलेट. XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप